ऐसा कुछ दिख रहा है कि भाई काफी हार्ड नेगोशिएशन है पीछे नेगोशिएट यूरोप के साथ, क्योंकि उन्होंने बेसिकली यूरोप की पूरी मतलब ही ओपनड अप देयर एंटायर प्रॉब्लम बड़ी क्लियरली। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, हमको आपसे एडवाइस नहीं चाहिए, हमको प्रीचिंग नहीं चाहिए, हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं। सो दैट टेल्स यू समथिंग, पीछे की बातें जो हो रही हैं वो क्या है। बिकॉज आपका इस बारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपके पास है पाकिस्तान की, व्हाट आर द कन्वर्सेशंस व्हिच आर हैपनिंग एट द बैक। एंड आखिर में बिफोर आई गेट पर्टिकुलर भाई इनसाइड, आई थिंक जो जिस तरह से एक रियलिज्म की बात उन्होंने करी कल, दैट सिग्निफाइज समथिंग कि किस तरह से आप दुनिया को आगे जाके देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है कि भाई जो एक सेट लाइंस होती थी कंट्रीज के बीच में, क्या वो ब्लर होंगी, क्या रियलिज्म आगे जाएगा, क्योंकि रियलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट, ये चीजें काइंड ऑफ साथ साथ चलती हैं। क्या ये आगे की दुनिया निकलने के आ रही है जो जयशंकर जी ने कल बोला, उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं। फतिक भाई नमस्कार, वेलकम टू शो। हाँ नमस्कार। देखिए, there are two aspects to it. The first aspect is कि we are already at a state of war with Pakistan. ये जो पानी बंद कर देना, फिर एयर स्पेस को बैन कर देना, फिर उनके जहाज को रोक देना, सब और सारी चीज जायज है। एंड द ओनली थिंग इज द काइनेटिक एक्शन। वो होगा, टाइम एंड प्लेस इंडिया डिसाइड करेगा, पर वो होगा। So क्या हुआ? There was a very recent statement by the foreign policy head of European Union. I have shared with you. If you can just show it, then it will be for reference purpose के लिए it will be easy for people to understand कि जयशंकर जी ने ये क्यों कहा। So that statement basically जो foreign policy head है of European Union, ये बेसिकली वही बकलोली है कि नहीं रिस्ट्रेंट दिखाओ, और रिस्ट्रेंट दिखा के दिस इज द स्टेटमेंट बाय काया कलर, and it says that rising tensions between India and Pakistan are alarming. I urge both sides to show restraint and pursue dialogue to ease the situation. Escalation helps no one. I spoke to both today to convey these messages. अच्छा, बहुत अच्छी चीज है, आपने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। एक तो पहली चीज आप सोचो, they are trying to hyphenate India and Pakistan in the same bracket. Can't a guy hunt for treasure in peace and quiet? तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम है, तुम दोनों बैठ के सॉर्ट आउट कर लो। और look at what the external affairs minister had stated earlier. वो आपके जो इनिशियल आपके टॉक शो से पहले जो आता है, उसमें that is also mentioned that victims of terror and perpetrators of terror cannot sit together. So ये यूरोप का जो नौटंकी है ना, और ये नौटंकी सॉर्ट आउट करना, इसको एक्सपोज करना जरूरी है, बिकॉज आज नहीं तो कल ये काइनेटिक एक्शन होगा। एंड आई एम सेइंग इट विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और इस बार इट विल नॉट बी अ स्टैंड अलोन स्ट्राइक लाइक बालाकोट, इट विल मूव टुवर्ड्स द डिसाइसिव थिंग, लेकिन उसके टाइम लगता है। बट ये यूरोप जैसे देश, यूरोपियन यूनियन जैसे जो है, सारे इनके जो कबाल है, तो कूद पड़ेंगे इंडिया के पीछे। And that is why this statement was important. So look at this. In the last 3 years, यूरोपियन यूनियन ने जितने नेगोशिएशन किया, पीस टॉक किया, यूक्रेन रशिया के लड़ाई को बंद करने के लिए, कोई भी टॉक में उसने पुतिन को इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, इन द लास्ट 3 years सिर्फ और मिलिट्री एड, बाकी एड छोड़ दीजिए, सिर्फ मिलिट्री एड यूरोपियन कंट्रीज जितना दिया है यूक्रेन को, इट इज अराउंड 50 बिलियन यूरो। डॉलर में इट विल बी अ लिटिल मोर देन 50 बिलियन यूरो तुम देते हो ताकि लड़ाई चलती रहे। एंड डेमोक्रेसी के नाम पे तुमने जेलेंस्की को बिठाया, हु इज राइट नाउ अनइलेक्टेड, उसका टेन्योर खत्म हो गया। तुम लोग जो भी नेशनलिस्ट पार्टी फ्रांस में, जर्मनी में, रोमानिया में उनको बैन करने में लगे हो, क्योंकि तुम्हारा एक कमाल है, आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी इज रूलिंग ओवर रियलिटी। दैट इज व्हाट जयशंकर जी टॉक्ड अबाउट। व्हाट इज द रियलिटी? रशिया का कुछ कंसर्न था, नेटो एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, एड्रेस दैट, उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। पुतिन फैसिस्ट है, पुतिन डिक्टेटर है, पुतिन कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बकलोली कर रहा है, एज इफ यूक्रेन में सारे कुछ है।
एज इफ फ्रांस में और बाकी जगह पे सब कुछ है। तो ये जो आइडियोलॉजी इज बीइंग पुट अबाउट national interest. Russia has its own national interest. Russia has its own national concern. Likewise, in case of India, इन्होंने in the last 40 years हमेशा से यूरोपियन यूनियन यही करता आया है, they will hyphenate bracket India and Pakistan into the same league. तुम्हारी औकात नहीं है. You're talking to a $4.3 trillion economy. उसको बोल रहे हो कि एक ऐसे देश के साथ बात करें जो फेल स्टेट है, जो हर 6 महीने में भीख मांगता है IMF वर्ल्ड बैंक के पास, और यही यूरोपियन यूनियन जैसे देश वो पैसा देता है ताकि वो फिर से टेररिज्म कर। इनकी जो वॉर ऑन टेरर था, एंड दिस मस्ट बी एक्सपोज्ड, ये सारे वॉर ऑन टेरर में यूरोपियंस वर इक्वली इन्वॉल्व्ड अमेरिका के साथ। हैव दे एवर टारगेटेड लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन? नो। You only targeted only and only Al-Qaeda because it was serving your purpose and interest. और जितने सारे बॉम्बिंग हुआ है लीबिया से शुरू करके, सीरिया से शुरू करके, what is happening in France, जितने सारे सोमालिया, सूडान, जहां जहां लड़ाई है, तुम देखोगे कोई ना कोई यूरोपियन देश इन्वॉल्व है। ये तो पोस्ट कॉलोनियल, न्यू कॉलोनियलिज्म एक्सट्रैक्ट करना और बॉम्बिंग करना। These guys then give lecture what India should do. That is why जयशंकर जी ने कहा कि हमारा जो रिलेशनशिप है विद रशिया, इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। व्हाट इज द रियलिटी? फर्स्ट इज दे आर अ रिसोर्स प्रोवाइडर, दे आर अ रिसोर्स कंज्यूमर। स्पेशली वो बात कर रहे थे अबाउट ऑयल। You had that coming. ऑन इश्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया रिलेशन ऑल्सो उन्होंने यही चीज कहा कि हमारे पास दो चॉइस है, आइदर वी ब्रिंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड देन स्टॉप एवरीथिंग, या फिर we bring the reality of mutual interest in the front and then look at each other's concerns and go forward. European Union का problem आज है, they still live in the 1960s like Joe Biden. वो एक ही उससे चट्टे बट्टे एक ही जगह किए। So they still are in the 1960s. They still believe that बाकी सारे देश जो है they are my colonies. So they have what is called a condescending approach. नहीं, हाँ बताइए। There's also actually the हमारे देश में कुछ यूरोपियन यूनियन के टट्टू भी हैं। देखा होगा आपने, आपको पता है मैं किन लोगों के बारे में मेंशन कर रहा हूँ। इनके काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं। जब भी कुछ एक अच्छा कुछ वो करते हैं तो उनको फटाफट ब्रसेल्स में ले आके टाइमिंग ये सब होता है। इन लोगों का जो आज नैरेटिव है, स्पेशली 2-3 लोगों का जो मैं ऑनलाइन कल से देख रहा हूँ कि you know the dialogue and diplomacy, India has been pushed into a corner because of dialogue and diplomacy. ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है जहां पर कंपेयर किया जा रहा है यूक्रेन को और पाकिस्तान, क्योंकि भारत बोलता है यूक्रेन के साथ कि भाई पाकिस्तान आप डायलॉग एंड डिप्लोमेसी करो, नथिंग इज सॉल्व्ड ऑन द बैटलफील्ड। तो ये भारत का डायलॉग, वही चीज हमारे पास फेंकने की कोशिश कर रहे हैं टू टेल अस दैट देखो आपने हमको सपोर्ट नहीं करा। तो देयर इज दिस इज आल्सो देयर विद इन द यूरोपियंस एंड आई हैव रेड दिस फ्रॉम सर्टेन यूरोपियन चैप्टर्स कि भाई तो इंडिया डिडंट सपोर्ट अस विद यूक्रेन सो वी नीड टू आल्सो कीप अ अलूफ सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर यूरोप का जो ये अलूफ नेचर है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको लगाया जा रहा है रशियन अलूफ डायलॉग के साथ, बिकॉज रशिया ने भी वही चीज बोली है विच इज अ स्टैंडर्ड डायलॉग। पीछे से जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं, बट यूरोप के साथ कुछ पीछे में नहीं है। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन दिस। आपका क्या ख्याल है अबाउट दिस डिफरेंशिएशन? क्योंकि भारत के अंदर जो इस टाइम पे आवाजें हैं वो बेसिकली यूरोपियन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को रशियन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से कंपेयर कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? एक तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेड बाय यू। एक तो यूरोपियन यूनियन का अप्रोच एलूफ वाला नहीं है, उंगली करने वाला है। ये हर चीज में पिछले 60 साल से उंगली करते रहे। ये जितने सारे एनजीओ है, जितने सारे थिंक टैंक जो हर जगह पे क्लाइमेट एक्शन के नाम पे पक्योली करता रहता है, एक बेहतर वर्ड है मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता शो में, बट वो द इशू इज कि वो उंगली करते हैं। दे कैन से कि भाई तुम अपने हिसाब से देख लो जो भी है। इट्स नॉट लाइक दैट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हीं में कुछ देश है, दे विल कीप ऑन प्रेसिंग नहीं पीस पीस
देखो, इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन रशिया इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। अच्छा, पहली चीज है कि डिफरेंट इसलिए है कि उनमें देयर आर टू कंट्रीज इन्वॉल्व। यूक्रेन के अब बहुत सारे यूक्रेन ने कुछ किया है, नो डाउट अबाउट इट। देयर इज इट्स अ डिफैक्टो रशिया वर्सेस नेटो वॉर गोइंग ऑन, एंड उसमें रशिया के बारे में भी मोदी जी ने जो कहा, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, लेट मी पुट इट दिस वे। उसका कारण क्या है? कारण है कि ठीक है, यू ट्राई इट इन द डिप्लोमेटिक मैनर, अगर नहीं होता है देन यू कैन लुक एट टू अदर थिंग्स, यू ट्राई द अदर वे अराउंड। एंड यस, ये भी सही है कि पुतिन ने कोशिश भी किया था, बट आप पाकिस्तान के साथ क्या डिप्लोमेसी करोगे? हमने क्या नहीं किया पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली, क्या कोशिश नहीं की? वाजपेयी जी ने बस लेके गया लाहौर में, एंड आई एम टेलिंग यू, आई वाज नेवर एंड आई एम स्टिल नेवर अ बिग सपोर्टर ऑफ। ये सब हम लोग करते रहते हैं, सोचते हैं कि इससे बहुत अच्छाई होगी, हम अगर अच्छे करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, नहीं होता। फ्रॉम दैट टू मोदी जी ट्राइंग हिज बेस्ट, कि वो गए थे, एक इम्प्रॉम्प्टू विजिट किया था पाकिस्तान में, आई थिंक 2015 या 2016 अर्ली में। फिर उसके बाद जब टेरर अटैक इंडिया में हुआ उरी में, यू अलाउड इवन FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, टू कम एंड हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। यू सेंट मोर देन 20 डॉसियर्स, आपने DNA सैंपल्स भेजा, आपने एविडेंस भेजा, फिर आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला, आपको पहलगाम मिला, आपको पुलवामा मिला। और यही यूरोपियन देश जब इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्टेड बाय पाकिस्तान, फिर उनका रवैया कुछ और हो जाता है कि मैं तो तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। और ओसामा बिन लादेन को इन लोगों ने जो मारा था, ऐसे ही था ना। यूरोपियंस ने GSP प्लस बंद करी है, इनकी क्यों इमरान खान को जेल से निकालो, GSP प्लस बंद कर देंगे तो तुम्हारी, राइट। सो ये है हिपोक्रेसी, जब अपना करना होता है तो तुम मारो। एग्जैक्ट, एंड दैट इज व्हाई ये जो है ना कि हाँ, उनके चट्टे बट्टे टट्टू यहाँ पे है क्योंकि वो पैसे फेंकते हैं, और यहाँ पैसे लपकने के लिए लोग बैठे हैं। ठीक है, आदि अचिंत्य पथिकृत फाइन को ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी इतनी औकात है, हम खुद कमा लेते हैं, और विदेश भी जाना होता है, हमें किसी की जरूरत नहीं होता, वी कैन डू इट ऑन आवर ओन। यहाँ लोग थिंक टैंक्स में बैठे रहते हैं कि कब मेरे को मौका मिले ब्रसल्स जाने, इसीलिए थिंक टैंक में जाते हैं। What जयशंकर जी said yesterday is very simple, कि भाई प्रीच मत करो। इंडिया ने when it comes to the Ukraine-Russia thing, India was, you know, it maintained equidistance from both। हाँ, रशिया के साथ रिश्ता है, वो है, तो फिर आप भी खुल के बोलो ना कि यूरोप के साथ पाकिस्तान का रिश्ता है, बोल दो। आप बिजनेस के लिए इंडिया के पास आओगे, ठीक है, बिजनेस के लिए इंडिया के पास आओगे, फिर इंडिया को लेक्चर मारोगे, डोंट डू दैट। We make it very clear that we have business relation, we have connect with the Russians, वो क्लियर है। उसके बावजूद if I am not mistaken, एक मैसेकर हुआ था in one of the particular city of Ukraine, उसमें इंडिया ने कंडेम किया था रशिया को। When मोदी जी said, हाँ पूछा था, हाँ, तो बोला था कि भाई this is not correct, this should not happen। I agree, जी, I'm not saying the specific statement, but उसका विरोध किया। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अच्छा, ये यूरोपियन वाले की है ना, जो FATF में इनको कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया, ब्लैकलिस्ट में लगता है निकाल लेता है। बहुत बड़ा काम किया, 3 माह किया कि उसको ब्लैकलिस्ट से निकाल लिया। तो नाउ आई थिंक इंडियन स्टैंड इज क्लियर, और हम लोग we don't expect anything from them। Anyone that runs for me? I don't care. Please do something। देखो पाकिस्तान ने क्या किया। We are not going to United Nations Security Council, ये पाकिस्तान जा रहा है। We are not going to European Union की भाई तुम कंडेम करो नहीं, ये तो तुम खुद कर रहे हो, तुम खुद फ्लोट मार रहे हो। That is why जयशंकर जी ने कहा कि we don't need preachers, we need partners। और अब तो ठीक है, जो पार्टनर है वो आएगा,
towards a decisive end. ये इस बार ना decisive end इसलिए होगा because there is political pressure as well on the government. लोग बहुत झेल चुके हैं. हमारे और problems है. There is an internal issue. There is a Pakistani mindset of some people within India as well. इसमें sort of करना है. Got him on the run. Pakistan is a problem. Pakistan is a problem. ना जब तक आप hyperactive तुम बैठ के बात करो, तुम बैठ कर रशिया के साथ बात करके तब sort out कर लो ना. 3 साल में तुम कर नहीं पाए. रशिया को Take a support shot. Come on. तुम्हें I support dare you. करना है पाकिस्तान को तो support कर दो. हमें कोई आता जाता नहीं है. We have nothing to do with European Union. That is a statement. और उसके बाद देख रहा तुम दौड़ के आएगा यूरोपियन यूनियन से लोग ये ट्रेड डील कर लो ना प्लीज. तो तुम जाओ ना, तुम जाके ट्रेड डील पाकिस्तान के साथ करो कि हर साल कितने टेररिस्ट वो भेजेंगे, कितने रेडिकल्स वो भेजेंगे, वो भी ट्रेड डील में इंक्लूड कर लेना. ह्यूमन रिसोर्स या रेडिकल रिसोर्स तुम ट्रेड डील लेना से करो. And let me tell you, European Union is a bottomless pit of all kind of dark elements. Having a field day out here. They are warmongers of the highest kind. And I have some complaint with government of India as well, with all due respect. कि आप जो कर रहे हो यूरोपियन यूनियन को बोल रहे हो सही बात है, पर यूरोपियन यूनियन ओके थिंक टैंक पर आपके यूनिवर्सिटी में घुस के आप ही के खिलाफ रेडिकलाइजेशन इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा है, उसको भी तो ऊपर कुछ करना चाहिए. आप उसके ऊपर कुछ नहीं करोगे तो फिर ये स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा. बट आई 100% सपोर्ट जयशंकर जी फॉर शोइंग द मिरर. देयर आर सम थिंग्स. ये जो जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दिया, we need partners not breachers. Look at this from the previous statement that we have given 2022. Not whether you win or lose, how you play the game. But I'm not Europe say problem. that because तो जब रशिया यूक्रेन का लड़ाई होता है पूरे दुनिया के इसके बारे में सोचता है. हाँ, बहुत बड़ी बहुत दुख की बात है. Because white men are dying, white Christians are dying. But when something happens in South Asia, when Hindus die, आपकी औकात नहीं होती बोलने की कि हिंदुओं को चुन के मारा. ना यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, ना उनका चट्टे बट्टे इंडिया में जो है वो बोल रहा है. दैट इज वेयर वी हैव अ डिफरेंस. सो व्हेन मोदी जी सेड कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, you may agree to it, you may not disagree, you may disagree to it, but I still believe that as per our philosophy, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो, आप देखोगे दोनों में ही शांति दूत पहले भेजा गया था to avoid war. For Krishna and Rama, war was the last resort. It's always the last resource for any matured nation. Yes, and हमारे लिए we have reached that end of the cliff. Threshold. हमारे पास और कोई रिसोर्स बचा ही नहीं है, तब जाके आप लेक्चर मार रहे हो. That is where I think this statement was timely, but it has to be followed with many other actions. Yeah, please. By the way, we are not declaring war. Otherwise, we would have done it by now. This is a difference. And war is different, and slapping someone on the face is different when they go beyond a certain line. So ये चीज़ I think Europe को समझनी है. That's a good point, Pathik ji. Thank you so much for that update. And by the way, guys, मैं पहले ही announce कर रहा हूँ, Pathik भाई and me are going to talk about ये जो इन्होंने लास्ट में बोला कि जो वामपंथी घुसे हुए हैं ना हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, इसके ऊपर हमको बात करना बहुत जरूरी है. एजुकेशन एक एरिया है जो टेक टॉक्स पे हमने इतनी बात करी नहीं है, तो आई थिंक इस सब्जेक्ट पे हम घंटी बिताएंगे. सबसे पहले बात करके ये हमको करना है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट. प्लीज चैनल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, and most importantly share this with your friends and families, and of course if you can do contribute to this channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.
My guest today is Major General Rajan Kochar, MG AOC Central Command. Welcome, sir. Thank you very much. So we are at a situation where we know that war will happen any time, or probably India will definitely strike any time. Now, in all this, there is a big question that when you war, you fight with ammunitions. Both the sides, they are definitely like piling up to the stocks. How long do you think will Pakistan's ammunitions last if India goes on a full-scale war? A very good question, because most of us focus on operational art, how the infantry is going to fight out, and the armor is going to fight out, the artillery is going to deploy resources. But the most important factor of the good army is the logistics. So, I have a good feeling about it. Part of war fighting capability. So every nation has a war wastage reserve. War wastage reserve. Okay. And we call it WWR. Okay. So this war wastage reserve is as part of the government policy. How many days of reserves you visualize to hold, Okay. in case of a conflict. Okay. Our philosophy has been 30 days intense and 30 days Is it normal. normal? So if you convert the normal into intense, the ratio is 1:3. So that implies that the Indian Army is capable of 40 days intense war. And that is the capability of the Indian Army to fight for 40 days without looking back. Okay. Because we have those resources as well. Without calling for extra ammunition. Yeah. Okay. Now, similarly, Pakistan Army has also a similar kind of a concept. But you'll be surprised to know that today the Pakistan Army has only 7 to 10 days of WWR. Okay. That means they have the ammunition for intense conflict for not more than 7 to 8 days. Okay. And that is why you are seeing all their envoys, Bilawal, Bhutto, everybody Like asking for international intervention Yes. to stop the war, because you see, bravado is one thing. They know they will have to surrender. Yes, General Munir is showing bravado today. He's showing, okay, you That's posturing. take on, posturing. False posturing, you can say. Absolutely. And that posturing has to be followed by the ground realities. The ground realities suggest that the Pakistan Army, in the worst case scenario also, can stretch it up to 10 days. Okay. Then what happens? Within the own nation, you must have the surge capacity. Okay. Okay. For example, you must have a defense ecosystem within the country for manufacturing of ammunition. Because as and when the ammunition is getting As per expanded, requirement. you have the capability to manufacture it also. Okay. Unfortunately, in Pakistan, it is only the Pakistan ordnance factories which are manufacturing ammunition. They don't have private sector involved in manufacturing of ammunition. We have started now. Within our own country, if you would have heard about Adani and Yes. Mahindra Yes. They just got into. systems and L&T. They all have got into ammunition. I think Adani, they also moved into Kanpur. They started a Absolutely. facility. The Kanpur factory right now is manufacturing small arms ammunition. They are slowly graduating to the heavy caliber ammunition or medium caliber ammunition. Okay. Okay. So, suffice to say that Pakistan does not have the surge capacity. Now, what does Pakistan do then? Yes. Pakistan has to look over the shoulders to China, Take that. So, to Turkey. are you anticipating that, like Ukraine got its ammunition from US and Germany and even France, for that matter, here Pakistan will be struggling to get it. Can China and Turkey technically supply ammunition to Pakistan? See, what happens in war-like conditions, the ammunition resupply has to happen very fast.
you can't wait for 30 days for the ammunition to come. Correct. Because it has to be instantly. Correct. You want some ammunition. So, how does this ammunition come to Pakistan? There are only two ways it can come through. Either from the sea or from the air. So the vulnerability in the war, and I think the Indian Navy will have to play a very Vital role in the blockade of the Karachi on the sea route. and also to ensure that whatever logistic help Pakistan is getting from outside, it is targeted. Okay. If you remember, Russia did the same thing with Ukraine. Convoys from Poland, from Romania, they were targeted. Yes. Yes. And destroyed. So I think every nation will have to take into account, and we will also have to take into account that in case China is helping out Pakistan or Turkey, because from Turkey it has to come only by air. Correct. Correct. By the time it comes through the sea, it takes a lot of time. Correct. So we have to, and I'm sure there must be a plan for that. And we are not better placed in terms of like handling such situations. You were talking about some cold start strategy. Can you throw some light? See, what happens is that I'll take you back to 2001-2 when Parakram happened. At that time, we were following the Sundarji doctrine. So Operation Parakram was It was immediately after the parliament attack. okay. So we decided to attack Pakistan that day. We mobilized Okay. and we were at the border for more than 1 year. Okay. And actually we missed that opportunity to get into Pakistan. Okay. So Pakistan was not prepared that time. Okay. And Pakistan was not anticipating that the Indian army will mobilize and launch an offensive. Okay. And I think American pressure was there, a lot of things. And the political thing. So we didn't go through anyway. Okay. That was an opportunity lost. Yeah, okay. Now, what happened in Parakram was the Sundarji doctrine we were actually following, and we wanted to mobilize the entire Indian army at the same time. So it took us almost 30 to 40 days to mobilize. Okay. The lesson learned was that you need to reduce your time period of mobilization. So the cold start doctrine came into play as far as we are concerned. So that implies no need for the entire army to mobilize. You have integrated battle groups today. Short troops, or we can say short mobilization. Short mobilization groups which have RT element, which have an armored element, which have an infantry element, which have a mechanized infantry element, Okay. and the rockets and the missiles and all. You are a small group. Say 300 vehicles, I'm just giving you an example. Okay. And you mobilize this small group onto the border. Running out, people. You take the enemy by surprise and you move in with specific objectives. And those objectives lead us very closely to Pakistan. Capture a certain area 20 and come back. kilometers, 30 kilometers. Capture the areas fast. Yeah. And then use them as a bargaining. Like a rapid Ha. action. The guerrilla, you can say. Yeah. The guerrilla warfare. Not exactly guerrilla, but then you Get back faster out there with and show them how it's done. specific battle groups Okay. to target objectives. You don't reach the threshold of the nuclear war also, because we are talking about deep into Pakistan. Okay. So the pressure of nuclear will not come. I'm taking this. Hello. English. You speak English? I need an
immediate bailout here. Oh, damn it. Don't come. Two people are here. Someone, pick me up. Oh, this is not. I think you need another go round. Right now. Contract terminated. Time's ticking away, everyone. Oh, shit! Take this! Put them Coming down! at you! We're all done here! Nice job, but let's not waste time comparing halls. We've got more work to do. Ready for more, Nadine? Take that.
can never have enough. Good, good. Thank you. Get my hands dirty. Bring on the next one. Don't relax yet. There's still more to do. I hear there's a rival PMC in the area. Keep your egos in check and they won't stand a chance against us. Understood, Nadine. Now fly along. Your shit, mate! What, no witty remark? Your training must be better than I thought. You definitely put them in that place. I was hoping this would be a bigger challenge. Don't relax yet. There's still more to do. Hey, my signal's cutting out. You're on your own for the moment. Take that.
Okay, I'm back. Did I miss anything? Hell yes! Now that's the kind of challenge I live for. And nearly die for. Stay sharp. We're not done yet. There's treasure in play, so hurry up and fill your pockets. Oh, treasure drop. Say your goddamn prayers! Take this! Come on! Pulling it down! Something! Julian! Get it down! Damn it! No, 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 no. Quit crying. You're going to be okay. And I'm big. Yes! One more go should do it.
barely needed help. Oh, this is not happening. Oh shit. Bleeding. Bleeding out. I will not die begging. Help. I'm too valuable to die like this. This is horse shit. Pick me up. If someone doesn't help me, there will be hell to pay. Oh shit.